चलो, गुड गुड. नाउ टेक अ डीप ब्रेथ. वी आर गोइंग टू स्टार्ट डूइंग फुल आरसीज. हम आरसीज में क्या करने वाले हैं अभी? वी आर गोइंग टू रीड इट वन पैराग्राफ एट अ टाइम. है ना? देखो, इसकी रीडेबिलिटी है ना? ये इतना छोटा करूंगी तो रीडेबल नहीं है क्या? दिस इज कैट 2018. दिस इज रीडेबल, है ना? पढ़ो इसको. गुड. रीड दिस one paragraph. Actually, I would want you to go one paragraph at a time. So I'll just display two paras. Go one paragraph at a time. ठीक है? पहले तो पढ़ते पढ़ते कीप एलिमिनेटिंग मॉडिफायर्स, देन कीप एलिमिनेटिंग लो प्रायोरिटी सेंटेंसेस. ड्रॉ कि भाई ये मेन सेंटेंस है इस पैराग्राफ का. मेन पॉइंट समझते आना चाहिए. पर्पस टोन नहीं समझा तो भी चलेगा, बिकॉज इट्स ओके. ठीक है? बट मेन पॉइंट समझते जाना चाहिए. कितने पैसेजेस हैं अपने पास? 1 2 3 4 5 6 passages. This RC has 6 passages, 6 lines. 6 passages नहीं, 6 paragraphs, 6 lines में हम ये RC कंक्लूड करने वाले हैं. क्या बोला है? द इंडियन गवर्नमेंट इज अनाउंस्ड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन टू डिजाइन वॉर मेमोरियल, नेशनल वॉर मेमोरियल इन दिल्ली टू ऑनर ऑल इंडियन सोल्जर्स हु सर्व्ड इन वेरियस वॉर्स एंड काउंटर इंसर्जेंसीज कैंपेन्स फ्रॉम 1947. इसका मेन पॉइंट क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है नेशनल वॉर मेमोरियल बना रही है फॉर इंडियन सोल्जर्स हु सर्व 1947 ऑनवर्ड्स. ठीक है? हमारे इंडिपेंडेंस के बाद, है ना? हमारे इंडिपेंडेंस के बाद, रफली हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडियन सोल्जर्स ने वॉर्स में पार्टिसिपेट किया उनके लिए हम नेशनल वॉर मेमोरियल बना रहे हैं. द टर्म्स ऑफ द कॉम्पिटिशन ऑल्सो स्पेसिफाइड दैट अ न्यू स्ट्रक्चर मतलब नेशनल वॉर मेमोरियल which would be built adjacent to India Gate, which is memorial for World War 1. ठीक है? तो हमको क्या क्या पता है? इतना पता है. द इंडियन गवर्नमेंट इज मेकिंग नेशनल वॉर मेमोरियल फॉर इंडियन सोल्जर्स who participated after 1947. ठीक है? एंड इट इज गोइंग टू बी बिल्ड एडजेसेंट टू इंडिया गेट. इंडिया गेट क्या है? इंडिया गेट जो है वो मेमोरियल है ऑफ पीपल हु डाइड इन सोल्जर्स हु डाइड इन वर्ल्ड वॉर 1. इतना है. सिंपल सिंपल, राइट? बिटवीन द ओल्ड इंपेरियलिस्टिक मेमोरियल. ओल्ड मतलब कौन सा इंडिया गेट की बात कर रहे हैं? ओल्ड. एंड द न्यू नेशनलिस्ट वन मतलब इसकी बात कर रहे हैं. Between the old one, that is India Gate, and the new one, that is this National War Memorial that is talking about, India's contribution to Second World War is airbrushed out of existence. Between these two things, इंडिया ने जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया उसको तो मिटा ही रहे हो तुम. ये है ओपिनियन. I would like to highlight all these things in a different way so that it's मैं उसको ब्लैक कलर से एलिमिनेट करती हूँ, बेटर है. सो इंडियन गवर्नमेंट इज डिजाइनिंग अ नेशनल वॉर मेमोरियल टू honor Indian soldiers who participated in campaigns 1947 onwards. ठीक है? This new structure it to be built beside India Gate, a memorial for First World War. ठीक है? Now the thing is, ये हमें पता होना चाहिए कि old मतलब imperial, ये इंडिया गेट की बात कर रहे हैं. और between these two, India's contribution in Second World War is airbrushed out of existence. This is your opinion. तो ऑथर का ये कहना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, इसमें हिस्ट्री थोड़ी पता होनी चाहिए हमको. ऑब्वियसली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है, फिर इंडिपेंडेंस मिला हमको, राइट? इनफैक्ट इफ यू हैव सबने 10th ग्रेड पास किया है, यू मस्ट नो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतना डैमेज हुआ था यूरोप को एंड ब्रिटेन को, और फिर वहां डैमेज हो गया, उनको वहां रिपेयर करना है, ऊपर से यहाँ बहुत कुछ हो रहा है इंटरनली, तो उनके लिए डिफिकल्ट हो गया टू मेंटेन, उनको अपना संभालना था. So Second World War was a very important reason why the destruction that happened in Europe in Second World War was very important reason why we got independence soon after it. है ना? तो ये हमें पता होना चाहिए, राइट? 39 से 42 चला हो, 47, तो ये हमें पता होना चाहिए. बट नहीं भी पता हो तो दैट इज व्हाट आई ट्राइंग टू से कि तुमने वर्ल्ड वॉर 1 के लिए मेमोरियल बनाया और फिर तुम इंडिपेंडेंस की बात का मेमोरियल बना रहे हो, और इन दोनों के बीच में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मेमोरियल है वो तो है ही नहीं. So India's contribution in the Second World War is airbrushed out of existence. कि ये तो ऊपर का पूरा कॉन्टेक्स्ट हो गया. ऑथर को ये बताना था कि ये भी है, ये भी है, बट इन सब के बीच में बिटवीन दीज टू इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज एयरब्रश्ड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस. ये ऑथर का ओपिनियन है, और ये ऑथर ने अपना ओपिनियन अभी बता दिया. अब ऑथर ना आगे ये समझो, ये साइकी समझो कि अब ऑथर क्या करेगा, अभी तुम्हें जस्टिफाई करेगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ. Why am I saying this? Why am I saying that India's contribution in Second World War is airbrushed? ठीक है? So author will keep on telling. तो अभी expect that is what is going to come next.
or something on those lines. When we keep that in mind, we can read passages better. ठीक है? तो ना start understanding. Be in author's shoe. Be in author's shoe. कि today if Amrita comes and Amrita tells me that I think Ranveer Singh is the most overrated actor Bollywood has ever had. बोल दिया उसने. अगर अमृता ने ऐसे बोला फिर चले जाएगी क्या वो सोने? नहीं, फिर वो बताएगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ. Because X, because Y, because Z. So whenever somebody tells their opinion, there are two ways. Either you tell entire story, है ना? Either Amrita is like कि Ranveer Singh this or Ranveer Singh that, this, and then she concludes that he is overrated, right? Or she says that he's overrated and keeps justifying why. है ना? Nobody sleeps after telling their opinion. They justify their opinion, right? तो वही होगा कि ऑथर ने ओपिनियन दे दिया, अभी एक्सपेक्ट आगे ऑथर बताएगा कि क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ. ठीक है, चलो. Next, most of you said that the last sentence is the more important sentence. Good. Now do second paragraph. Tell me इसमें कौन सा sentence important है? Good. तो यहाँ क्या बोला है? The Indian government's conception of the war memorial was not merely absent-minded. देखो, by the way, just to tell you, when there is something is airbrushed out of existence, you are basically saying that the government is trying to do it जानबूझ के. ठीक है, तो हवा में उड़न छू कर दिया यार, क्योंकि अदरवाइज ऑथर वुड से कि इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू सेकंड वर्ल्ड वॉर इज मिस्ड. ये मिस कर दिया, ये नहीं बोला, एयर ब्रश कर दिया, हवा में उड़न छू कर दिया. दिस इज अ क्लेम दैट यू डू समथिंग डेलिबरेटली. इट डिडंट हैपन बाय मिस्टेक, यू डिड इट डेलिबरेटली. सो ऑथर विल टेल यू व्हाई. यस, सो लेट अस डू सेकंड. आई सॉ योर आंसर्स, दिख रहा है, पॉप हो रहा है. ओके, सो लेट अस डू पैरा 2. पैरा 2 सेज, तो अभी तुमने बोल दिया कि सो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट का कंक्लूजन क्या है कि बिकॉज ऑफ दिस नेशनल मेमोरियल थिंग, इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज बीइंग एयरब्रश्ड आउट ऑफ एक्जिस्टेंस. ठीक है, अब वो बोल रहे हैं द इंडियन गवर्नमेंट्स कंसेप्शन ऑफ द वॉर मेमोरियल. कंसेप्शन मतलब ये जो नेशनल वॉर मेमोरियल है उसको बनाना was not merely absent minded. Absent minded मतलब गलती से हो गया. It was not just something that गलती से happened. Rather, it accurately reflected the fact that both academic history and popular memory have yet to come to terms with India's Second World War, which continues to be seen as a little more mood music in the drama of India's advance towards independence and partition in 1947. This is a big sentence. When you have big sentence, it becomes really important for you to use modifiers. Very, very important. What we learned as a part of our first class regarding RCs. तो यहाँ से यहाँ तक हमारा बड़ा सेंटेंस है, इसको हम पहले करेंगे छोटा. So rather, first you have to understand, it says it was not this, but this. Do you remember I told you that what not doesn't matter, but what happened matters? जिसका मुझे example नहीं मिल रहा था at the beginning of this class when I was trying to tell you कि something not, but something did. So what didn't happen doesn't matter. So what didn't happen doesn't matter. It didn't happen by mistake. It was not merely absent-minded. इतना नहीं करती हूँ डाक, थोड़ा होना चाहिए अपने पास देखने के लिए. This didn't happen. It did not happen by mistake. Okay, what did not happen doesn't matter. What happened is it accurately reflected the fact. Now, it rather like this happened, right? So this is more important. This did not happen, but this happened. So this sentence is important. But let us understand what this sentence means. It accurately reflected the fact. So the fact हटा दो. It reflected accurately, मतलब precisely, it's an adjective. ठीक है, हटा दिया. It reflected that both academic history and popular memory. It reflected that both academic history and popular memory, मतलब we. Academic history मतलब academicians, the informed one, and popular memory is regular people, right? Informed people and regular people, both are covered. So इसको भी हम eliminate करेंगे, बोलेंगे इसका मतलब है we. We have मतलब are yet to come to terms with in India's Second World War. Rather भी matter नहीं कर रहा. It reflected that we are yet to come to terms with India's Second World War. That we have not yet accepted India's Second World War. The fact that India's contribution to Second World War was airbrushed out of existence, it reflects that we are not yet to come terms with, मतलब we are still not accepting that India participated in World War II. India's Second World War, India's contribution to Second World War. It means that we are somewhere yet to come to terms with. मतलब we are still not believing that India participated in Second World War. यहाँ से modifier start होता है. Which is your word? Remember we learned. So which continues to be seen. Which मतलब India's Second World War continues to be seen
More is a mood music. Mood music क्या होता है? What is the meaning of what could this mood music mean? बताओ मुझे. What is mood music? The figurative thing written. यहाँ से second sentence start हो रहा है, समझो कि Second World War continues to be seen as mood music in the drama of India's something for entertainment. Okay, okay. What else could mood music mean? Is mood music loud? Is it loud? No, right? Mood music is not loud. It is always running in the background to set the mood, right? So something that is in background is called mood music. It's like a background music. You see, you listen to my reels. My reels have a BGM. When a reel is serious, there's a serious BGM. When it is something fun, it's a fun BGM. When it is something motivational, it is a motivational. So it's a background music in the drama of India's advance. Advance matlab India's step towards independence and partition. So basically, they are saying that in Second World War is still seen as a background, not as a reason, but a background when India was getting partition, India Pakistan ho raha tha, when India was getting independence, at that time, Second World War happened as a background. That is how it is seen. ऐसा वो कहना चाह रहा है. ठीक है. तो हमको मीनिंग नहीं भी समझा तो हमें समझना चाहिए कि भाई हम मेन पॉइंट कैसे निकाले. तो हम तो हमेशा जो मॉडिफायर होता है उसको तो एलिमिनेट ही कर देते हैं. ठीक है. सो क्या था अब तक कि इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये था. इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज बीइंग एयरब्रश्ड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस. ठीक है. दिस थिंग रिफ्लेक्ट्स दैट वी आर येट टू कम टू टर्म्स विद इंडिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मतलब इंडियाज पार्टिसिपेशन इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ठीक है. फर्दर, by the way, why because first we are thinking that it was just a background, that it just happened in the background. India was just busy getting independence and Second World War just happened in the background. Further matlab one more reason they are giving you. The political trajectory of the post-war subcontinent. The political trajectory, the political growth of post-war subcontinent has militated against popular remembrance of the war. Further, उसके आगे second reason ये है कि जिस तरीके से हमारा कंट्री पोस्ट वॉर मतलब वॉर होने के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद जिस तरीके से सबकॉन्टिनेंट इज इंडियन सबकॉन्टिनेंट, वॉर होने के बाद इंडियन सबकॉन्टिनेंट जिस तरीके से ग्रो हुआ है, मिलिटेटेड अगेंस्ट दैट ग्रोथ इज अगेंस्ट पॉपुलर रिमेम्बरेंस. मतलब वो प्रोग्रेस जिस तरीके से वो प्रोग्रेस नहीं चाहता, जिस तरीके से हम आगे बढ़े, हम नहीं चाहते कि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर याद रखें. क्यों? विद पार्टीशन एंड ऑनसेट इंडिया पाकिस्तान लाइब्रेरी, both new nations, India and Pakistan, need fresh stories of self-legitimization rather than focusing on shared wartime experience. Do you understand what it means? It means कि because India participated in Second World War before partition, so it means India Pakistan was together. But post political trajectory and World War One happened way back, 14 to 18. तो तब नहीं matter करता. But just before the independence, when this Second World War happened, तो India Pakistan की जो rivalry है, उसमें दोनों नेशंस को चाहिए कि मेरे पास एक फ्रेश स्टोरी हो, सो दैट आई कैन लेजिटिमाइज कि मैं अलग हूँ, मैं इंडिया से अलग हूँ, मैं पाकिस्तान से अलग हूँ, rather than focusing on shared wartime experience. We don't want to show that we participated as one single nation, because we did participate as one single nation in Second World War, right? But we need a new story, right? So these are two reasons. Again, as I told you, the reasons don't matter. Reasons don't matter. The result matters. The result is again that India is trying to forget that we participated in World War II. There are two reasons behind it. One is that it is still considered that it happened in the background. When we were busy getting independence, it happened in the background. We did not participate in it. Second reason is that we don't want to sell a story that we and Pakistan and India were same on the same side ever, right? So these are the two reasons. Okay. So we are yet to come to terms with this. ये एक है. And India Pakistan ये सब background है basically. With partition and onset, India Pakistan both need fresh stories rather than focusing on shared, do not want to focus on shared wartime. So this is our main point. So main point at the end ये blue ही हो जाता है कि it just shows that India wants to forget that they participated in Second World War. Why doesn't matter? I am just telling you why. ठीक है. तो ये हो गया. मतलब फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ में सेम ही बोला है. India is trying to erase our contribution in Second World War. We are forgetting or we are not accepting that India participated in Second World War. ठीक है. चलो उसके बगैर. However, we are trying to remove it. We are not accepting it. But the reality is, यहाँ पे the reality is mention नहीं किया है. However always tells you but, right? There's a background and then there's however, right?
Something like, I always give this example in the class. Something like, I tell you that you are a very nice person, right? Like, let's say you have an interview, I tell you are very nice, you are hardworking, you're talented, you have great communication skills, your resume is all up to the mark, but we are not selecting you. तो तारीफ मैटर करती है क्या? नहीं. But we are not selecting you. Whatever is said after but matters. You're the best thing that happened to me. You're the most beautiful girl I've ever met. You were kind. You have supported me through thick and thin. You have always been there with me. You're so kind and you're so everything. But we cannot be together. क्या मैटर करता है? We cannot be together, right? So whatever is said after but is more important. तो यहाँ पे भी वही है कि India is not accepting that we participated in World War II, but Second World War played a crucial role in both independence and partition of India. We are not accepting it, but the reality is that Second World War was actually very important to us. ये बोल दिया, अब बताएंगे क्यों. The Indian Army recruited, trained, and deployed some 2.5 million men. 21 million is 10 lakh. 2.25 lakh men were deployed during Second World War. 90,000 were killed and many more were injured. So our participation cannot be ignored by तुम भुलाने की कोशिश कर रहे हो, but बहुत evident था. Even at a time, it was recognized as the largest volunteer force in the war. Even at that time, it was recognized as the largest. ठीक है, तो इंडिया का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था. तुम भुलाने की कोशिश कर रहे हो, बट बहुत इंपॉर्टेंट था. रीजन वन, अगेन रीजन डोंट मैटर, दिस इज ऑल डिटेल्स, डोंट मैटर. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था. क्यों इंपॉर्टेंट था? कि फर्स्ट लार्जेस्ट वॉलंटियर फोर्स था. सेकेंड, इंडियाज मटेरियल एंड फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वॉर वॉज इक्वली सिग्निफिकेंट. एक तो तुमने लोग भेजे, फिर फाइनेंशियल एंड रिसोर्स वाइज ऑल्सो भी हेल्प अ लॉट. इंडिया इमर्ज एज अ मेजर मिलिट्री, इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिकल बेस फॉर अलाइड ऑपरेशंस. अलाइड मतलब ये ब्रिटेन, फ्रांस, एवरीबडी, जर्मनी, जापान, एवरीबडी वाज एक्सेस. ठीक है, थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री पता होना चाहिए, हेल्प होती है समझने में. India emerged as a major military, industrial, and logistical base for allied operations in Southeast Asia and Middle East. This led to United States to take considerable interest in country's future and ensure that this was no longer the preserve of British government. Second reason क्या था? उन्होंने ये क्लेम कर दिया बेटा, अभी इसके आगे रीजन है कि इंडिया का की सेकेंड वर्ल्ड वॉर तुम भूलना चाहते हो, तुम नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हो कि इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, तुम कंसिडर करते हो कि ये तो बस एक बैकग्राउंड था. बट रियलिटी इज वो बैकग्राउंड नहीं था, वो कारण था कि हमें इंडिपेंडेंस मिला. क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो हमने बहुत सारे लोग डाले थे, लॉट ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड. सेकेंड, इंडिया वॉज अ मिलिट्री एंड अ लॉजिस्टिकल बेस. उसके कारण क्या हुआ? यूनाइटेड स्टेट्स नोटिस्ड इंडिया एंड एंश्योर्ड कि भाई ब्रिटिशर्स के हाथ में नहीं रह सकता. फिर ब्रिटेन तो, क्योंकि यूएस और ब्रिटेन में भी तो था ना कौन पावर बनेगा, ऑल्दो दे वर फाइटिंग द वॉर फ्रॉम द सेम साइड. So United States want to take considerable interest in country's future and ensure that this is no longer the preserve of the British government. Other wartime developments pointed in the direction of India's independence. तो ये ऐसे कुछ फैक्टर्स थे कि एक तो हमारे पास इतना सारा लोग था, हमने मिलिट्री बेस ऑफर किया, हमने लॉजिस्टिकली सब संभाला. So this was all leading to the fact that India can be an independent country. In a stunning reversal of its long-standing financial relationship with Britain, मतलब क्या है? इंडिया फिनिश्ड एज वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रेडिटर्स. इंडिया ने पैसे उधार करे थे. लॉन्ग स्टैंडिंग हमारा रिश्ता क्या था कि हम पैसे ले रहे थे, ब्रिटेन हम पे रूल कर रहा था. बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड होते होते इंडिया का उधार ब्रिटेन पे था, राइट? सो दिस इज ऑल्सो थर्ड रीजन. ठीक है, these are all, though this entire passage is all a modifier because it's all telling you reasons, and as I told you, reasons don't matter, but I'm just explaining the reasons to you. मेन सेंटेंस अब तक तीन ही आया हमारे पास कि इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन इज दे आर ट्राइंग टू एयर ब्रश इट because India is not accepting that India participated in World War II, but reality is that World War II was actually what led to our independence and partition. ठीक है, उसके बाद such extraordinary mobilization of war was achieved at great human cost. ये जो इतना सारा लोगों को मोबिलाइजेशन, मतलब इतने सारे लोगों को जो तुमने वॉर में इन्वॉल्व किया, दैट हैपेंड बिकॉज एट ग्रेट ह्यूमन कॉस्ट. बंगाल फेमाइन, क्योंकि वॉर में तुम घुसे तो फेमाइन भी आया बंगाल में. The cost on India's home front must be counted in millions of life. Millions of life participated. Same thing. अभी बताया कि इंडिया participated. Okay. These are all background. ठीक है. Indians signed up to serve on war and home fronts for a variety of reasons. अब इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, ये हो गया. अब क्यों किया वो बता रहे. So India participated for various reasons. Many were convinced that their contribution would open doors to India's freedom. Why did India participate? Because we thought that would lead to India's freedom.
The political and social churn triggered by the war was evident in the massive waves of popular protest and unrest that washed over rural and urban India aftermath of the conflict. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हर जगह प्रोटेस्ट हुए, अनरेस्ट हुए, एक्सेट्रा. दिस टर्मोइल वाज क्रूशियल इन परसुइंग एटली गवर्नमेंट, जो तब का गवर्नर होगा, राइट, टू rid itself of incubus of ruling India. इतना ज्यादा इतना ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे, इतना ज्यादा अनरेस्ट था कि ये टर्मोइल हो गया ना. तो एटली गवर्नमेंट को लगा कि भाई इंडिया को छोड़ो, निकलो यहाँ से, आप नहीं संभाल पाएंगे, अपने पास ना इतना पैसा बचा है अभी, ना पेशेंस बचा है, हम ऑलरेडी तबाह हो चुके हैं वॉर में. 70 years on, 70 साल अब हो चुके हैं. इट इज टाइम दैट इंडिया एंगेज विद कॉम्प्लेक्स लेगेसीज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर. अब 70 साल हो गए हैं. इट इज टाइम कि हमने एक्सेप्ट करना शुरू करना चाहिए. Bringing war into the ambit of new national memorial would be fitting, if not overdue, recognition to this war. तुमने एक इस वॉर का भी मेमोरियल बनाना चाहिए. ठीक है, ये तुम्हारा कंक्लूजन है. डू यू अंडरस्टैंड दिस पैसेज बेटर नाउ? वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, ओके, दिस इज बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, दीज आर जस्ट रीजंस, आई जस्ट नीड टू पॉइंट आउट व्हाट इज मेन. तो मेन इतना ही क्या है बेटा, मेन पॉइंट समरी इसकी इतनी है, ठीक है, दैट इंडिया मतलब इंडिया नहीं, बट इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो, इंडिया एंड द गवर्नमेंट is trying to erase. ये बहुत बड़ा हो गया, मैं erase करके वैसे लिखना चाहूंगी, it's too big. Summary is that India and the government is trying to erase India's contribution, erase or downplay India's contribution in Second World War. India, or let's say the government, is trying to forget or erase India's contribution in Second World War, but reality is India heavily participated in World War II, and that led to its independence. It's high time. लास्ट में क्या बोला ऑथर ने? इट्स हाई टाइम, 70 साल हो गए अभी, वी मस्ट एक्नॉलेज दैट. इट्स हाई टाइम, वी मस्ट एक्नॉलेज दैट. 3 सेंटेंसेस का पूरा पैराग्राफ है, बाकी सब एक्सप्लेनेशन है. डू वी अंडरस्टैंड दिस पैसेज अ लिटिल बेटर नाउ? थम्स अप प्लीज. और इसका अगर हम पर्पस और टोन लिखने जाए, सो व्हाट इज द पर्पस? अगेन, द पर्पस इज टू चैलेंज. देयर इज अ डोमिनेंट नैरेटिव. व्हाट इज अ डोमिनेंट नैरेटिव? द डोमिनेंट नैरेटिव इज कि India did not participate in World War II. It was just like a background. It was not even that important. Right? But you are saying that you are trying to do this, but bro, that's not true. है ना? That's not true. तो ये तुम्हारा मेन वो है. Just a second. Yeah. ठीक है? तो यहाँ पे the purpose is to question or challenge or to persuade भी हो सकता है कि author basically starts with कि see, you are saying that India didn't participate in all, but reality is India participated heavily. है ना? तो अगर author इधर तक रुक जाता ना बेटा, इधर तक, है ना, where author is like you believed this, but I correct you, it was not true, India participated, so then the purpose was to question and correct. ठीक है? So sorry, to question or challenge, and the tone is corrective. You are correcting what you believe is wrong, the reality is this. But the moment author went here, author just didn't stop at correcting you. Author made a suggestion at the end. It is a high time that we must acknowledge something. But author is like कि मैं सही कह रहा हूँ, मेरी बात मानो. We must do something. That is when author starts persuading. So इधर तक अगर passage होता, ये last passage अगर हमारा part नहीं होता, the purpose of this entire passage was for author to question or challenge the popular narrative about India's contribution, that it did not contribute, but the reality is it contributed. But the moment I am saying that now you also accept it, I am taking a side and I am persuading कि जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो. ठीक है? और there is like जो मैं कह रहा हूँ वो चुपचाप सुनो, and it's high time that we start accepting it. मैं थोड़ा छोटा लिख देती हूँ यहाँ पे जगह के कारण. So read का purpose is to question / challenge, and the tone is to correct you. है ना? ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, बिकॉज व्हेन द क्वेश्चन कम्स दैट व्हाट इज द मेन इन्फरेंस,
The main inference is not author just trying to tell you that the common narrative is wrong, but the main purpose is for author to tell you that start accepting it as well. Start accepting the truth that, ठीक है? So इसमें purpose बन जाता है to persuade, ठीक है? And what is the tone? What is the tone? The tone is assertive, है ना? Prescriptive is when author tells you a action plan, है ना? Prescriptive है नहीं, यहाँ पे assertive मतलब you must do this. You assert your dominance. You're like, if I am telling you something, you better believe me. That is assertion. So that's why tone is assertive. It's high time that we must acknowledge that. So this is how you conclude what is the tone and purpose also of your essay.